Assalamu alaikum and welcome everyone to our Global UGRAD Exchange Program webinar. I am Mahin Fatma and I'm the General Secretary of YPDC and your host for today's session. Before we begin, let us seek guidance and blessings from the Allah Almighty. Please join me in reciting the Holy Quran. Over to you, Hijab. So I think there is just error. Just a minute. Mahin, am I audible? Mahin, am I audible? Yes, yes, Hassan, audible. Okay, so I guess main hijab का पे कुछ issue है तो I will go with the recitation and then we can proceed further. Okay, sure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Jazakallah. Thank you, Ahmed, for your beautiful recitation. Now, I would like to lead our webinar towards the main agenda. But before I introduce our distinguished speakers for UGRADE application process and all of these stuff, I would like you to know something about like our YPDC and our domain. So for that, I would like to invite our Vice President Aisha Naveed for uh, introducing us about Young Peace and Development Corps. Assalamualaikum everyone.
I hope you all are doing well and are as excited as I am to be here today. It gives me a great pleasure to welcome you all and all our guest speakers, Hasnain Adris, Ali Hamza Ibrahim, and Hijab Zahra to this UGRAD awareness session organized by the Young Peace and Development Corps at University of Agriculture, Faisalabad. So let me introduce YPDC. YPDC is a joint initiative of the Ministry of Planning Development and Special Initiatives and the Higher Education Commission of Pakistan, working here at UAF under the Senior Tutor Office. YPDC is a youth-led organization committed to empowering youth to champion peace, development, and sustainability. Our primary mission is to educate, inspire, and provide platforms for young individuals to address some of the most pressing challenges of our time, ranging from climate change to social justice and education. One of our key objectives at YPDC is to raise scholarship awareness, ensuring that students know about the opportunities that can enhance both their academic and personal growth. We believe that scholarship like a global UGRAD program and not only financial aids, but are incredible opportunities to study abroad, engage in cross-cultural experiences, and develop leadership skills that are crucial in today's interconnected world. Through this session, we aim to inform you about the UGRAD program, guide you through the application process, and show you how to make the most of this life-changing opportunity. Many students from UF have already benefited from UGRAD, and we hope to see many more of you succeed and represent our university on a global scale. So let's dive into the details of this program and explore how scholarships like these can open doors to a world of learning and growth for each of you. Thank you so much. Let's get started. Thank you, Aisha, for your time. So, today we are excited to have three distinguished speakers who will share their insights and experiences on the Global UGRAD Exchange Program. And of course, they have experiences and practical knowledge about this scholarship process and all of this stuff. So, first of all, I would like to invite Dr. Husnan Adis, who will be providing us an overview of the Global UGRAD Exchange Program. So, sir, I welcome you to come on the stage and present your perspective. Assalamu alaikum, everyone. My name is Dr. Hasnan Aziz. Please come from. Am I audible to you guys? Yes, sir. You are audible. Okay, I would request you to run on my PPT along with my introduction to the Global UGRAD program. I have handed over to your team. Okay. So, everyone, my name is Dr. Hasnan Aziz. I am a Global UGRAD Spring 2022 alumnus from Murray State University, Kentucky, USA. So today I have the opportunity to talk about the overview of the Global UGRAD program and what are the future perspectives of this scholarship in the relevant fields and related to higher education, your fields in Pakistan and other things. Please. Okay. So Global UGRAD Pakistan program is a fully funded one semester exchange program. The purpose of this program is to enrich the practical and educational exposure of the undergrad students from Pakistan to the United States. What are the difference of the study methodologies and what are the key motives of the undergrad studies in the United States and how they are different from Pakistan. Okay, so in-depth exposure to several key American values, including the but not limited to the civic engagement and diversity. In which state you are going to be placed, in which university you are going to be placed, you have to explore the culture, the norms, the ways, procedures. So all are about this program when you stay one semester in the United States at the designated university or college. So basically, the promote the mutual understanding between the people of United States of America and the Pakistani students, especially at the undergrad level. When you go there and you have made friends and
from all other countries as well. So this is the main purpose of this program. Next slide, please. Next slide, please. So we are on the slide of eligibility criteria. Please tell me if you can't see the slide. I think there is an internet connection on his side. Okay, he has joined us again. Okay, everyone, I'm back. Sorry for the inconvenience. Okay, so please move to the eligibility criteria. Move to the eligibility criteria. Eligibility. Sir, we are on the eligibility criteria slide. I'm the eligibility criteria for this program. Slide number 3, I think so. Yes, I am on that slide, and if you can't see that, please tell me. Also, Mahin, please tell me which slide is visible to you. Yes, Hijab, it's eligibility criteria slide. Uh, we can again upload or share the slides, Hijab, if it's not stuck. I'm not able to see the eligibility criteria. I should please. Okay, everyone, eligibility criteria has been changed this year. So only the students who are in their uh, second year of education, you can simply say that third and fourth semester students are only eligible to apply for this scholarship this year. All the criteria mentioned in the slides is not accurate because I have not changed intentionally because I want to make the pinpoint in your minds that the criteria has been changed this year. Only the students of third semester and fourth semester. And if I'm not wrong, there is a fall semester in the University of Agriculture, Islamabad. So most probably the third semester is going on in different faculties. So the third semester students are eligible this year for this scholarship program. So first year and other than all years and semesters are not eligible to apply for this program. So what are the required documents for this program? Your degree transcripts from first semester to the till semester, or if you are in the third semester, then till second semester. And if you are in the fourth semester, then till third semester transcripts are required to apply for this program. Unofficial transcripts must be tested from a relevant 17th scale officer or any government officer. So grading criteria must be attached, and
if you are from the University of Agriculture, Faisalabad students, so the grading criteria is always attached behind the DMC. So next slide, please. How the selection criteria works. Selection criteria works when you apply for the scholarship, the initial scrutiny has been done. Just you can say if this is the September, then initial scrutiny has been done by the 3 or 4 months after September 25 September 2024. You can simply assume in December or in the first week of January, call for the in-person interview from the United States Education Foundation, Pakistan. So the persons who have got the call for interview will be assessed further in the interview process that would be held in person this time and held in person last year too. So the online interviews were only when there was the COVID times, or we have entering from the COVID to post-COVID era. So this time that would be in person interview. In January or February, 3 centers are allocated in Lahore, Karachi, Islamabad, and for the Balochistan, I think so that would also be Quetta. So final candidates and alternate candidates are those candidates that got shortlisted after the successful interview. The final candidates, those are principal candidates, are those candidates who have the 100% surety to go to United States if they are not rejected by the US consulate for the visa, or there would be a delay at the visa issue ending. Okay, so in that case, if a principal candidate could not make his way to the United States due to any visa restriction, visa issuing, so then the alternate candidates would be promoted to the principal candidate. But there would be a chance that the some alternate candidates would not be able to go to United States due to the unavailability of the funding, or not too much slots available, as not every principal candidate or not much principal candidate got rejected their visas. Just 1 or 2 examples. Even in my batch, I have seen the 2 to 3 persons who got rejected their visas. And by the way, I was also an alternate candidate that promoted to principal candidate afterwards. Next slide, please. So how to apply for this program? The personal information, you have to put your credentials, your names, your father name, your background, and the other telephone numbers and emails. Then educational information, from where you get the matriculation, from where you get the FC, pre-medical or pre-engineering, whatever you have done, FA, and then additional information and other activities. And the finally, a statement of purpose or motivation letter. The main part of this application is the statement of purpose and the activities you are going to mention that should be aligned. So documents to be uploaded like academic transcripts and the certificates of extracurricular activities you guys have in your hand, that should be uploaded in the application. Next slide, please. So what is the statement of purpose? First of all, what you are in terms of your personality or an interest. If we are all Urdu speaking, तो मैं उर्दू में अगर बात करूँ तो आपकी personality को आपने एक या 2 लाइनों के अंदर बयान करना. You have to put about your background and any uniqueness in your personality in just 1 or 2 sentences. Then your extra co-curricular activities that you have done so far, your attributes that make you stand out as a competitive candidate. ये आपने अकेले अकेला मेंशन नहीं करना शुरू कर देना. उसके अंदर आपने अपनी उन एक्टिविटीज की बेस पे, लाइक अगर if a person has very good social work profile, so that would be a very good extrovert person, social leader, and has a very good leadership qualities. उस हिसाब से आपने ऐसे वर्ड्स आपने लिखने हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को मेंशन करेंगे कि जी आपकी पर्सनैलिटी ये. लाइक when I was in that stage, I was writing about myself. So upon all analysis of my personality, so I designated myself as cognitive mindset. So
because pragmatic mindset is that who has uh, the social as well as academically strong mindsets. So that is the your personality that would better rather than anyone else. So, what are your future goals in the next paragraph in terms of your field of study and personal development? So, what are your goals in your field? Either you want to pursue through your career in job, or either want to pursue your higher education in abroad in Pakistan or in other country. So, these are some guidelines for the statement of purpose. And at the last, what would be that? What is your uh, main desire that you want to pursue those goals in United States, or what your way to pursue your field or academic goals through this program, और स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि आपका जो गोल है जिंदगी के अंदर एक फील्ड के अंदर आपका या आपके एकेडमिकल जो गोल्स हैं, आप यूग्रैड के जरिए ही उनको क्यों अप्रोच करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, दैट वुड बी अ last closing statement of that words. Or I am reviewing the SOPs as well this year too, and I would request अगर आप में से SOP रिव्यू करने के लिए मुझे भेजता है तो प्लीज 250 वर्ड्स एक डेजिग्नेटेड वर्ड लिमिट है जिससे आप क्रॉस नहीं कर सकते. हमें ऐसी भी रिव्यू करने के लिए आती हैं जो 300 वर्ड्स 350 वर्ड्स की होती है और आगे से हमें मैसेज आता है कि आप उसको खुद शॉर्ट कर दें. तो वी आर नॉट हैव मच टाइम और वी आर नॉट डेजिग्नेटेड फॉर दिस कि हम आपको शॉर्ट करके दें. यू अगर आप 400-250 वर्ड्स भी नहीं लिख सकते अपने बारे में, so I don't think so you have the right of this to get this scholarship, because there is competition is tough and वहाँ वही बंदा या बंदी सिलेक्ट होगी या बच्चा सिलेक्ट होगा जो इन सारे बैरियर्स को क्रॉस करके जाएगा. So it is a security check or is there a scrutiny check in your application process who is going to present his or her real picture. what was आपको कोई लंबी चौड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपल आप क्या हैं, अब तक आपने क्या किया है और आपने कैसे अपने फ्यूचर को आगे लेके चलना है, दैट इज इनफ. और यूएसए के अंदर उसको अलाइन कर दें, दैट्स इट. यही आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Next slide, please. So what was my experience? You can see that I was in United States. I was doing the community service in Callaway County Animal Shelter, a very big county in Kentucky State. I have visited with my friends to Chicago, to New York, and some other diagnostic laboratories in Kentucky as well. So that is the picture of my experience. Next slide, please. So you can see I am standing with the mayor of my city, that is Murray State. My city was Murray in Callaway County, Kentucky. I am an equine veterinarian right now, and I have the passion of equine reproduction in my days in United States. So I used to work in the courses of equine reproduction at the Rodolph Equine Education Center as well. Next slide, please. So how many slots do they have for this program? Bad luckily, they have reduced the number of slots. Like if they have been going to select last year 145, 150, and something more than the students. So this time they have, according to my information, they are going to select only 100 or 120%. But at the same time, they have tried to reduce the number of applications as well by designating the number of year eligibility. Like if a person is only eligible for the UGRAD program if or he or she falls in the eligibility criteria of education, either she is in third or fourth semester. Other than this semester, anyone student is not eligible. So if अगर एक वक्त पे उन्होंने applications को कम किया है तो slots भी उन्होंने कम की हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट अ बिग इशू. अगर उन्होंने स्लॉट्स कम कर दी हैं तो उन्होंने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को भी कम कर दिया है. एट माय टाइम व्हेन आई वाज एप्लीकेंट, देयर वाज 19,000 एप्लीकेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान. सो उनमें से सिर्फ 250 को उन्होंने सेलेक्ट किया था फॉर 3 बैचेस, बिकॉज हमारा कोविड के बाद सबसे पहला बैच था. सो
उसको उन्होंने अकोमोडेट करने के लिए सबसे ज्यादा जो है ना मैंने तब सेलेक्ट किए थे। उसके बाद फिर नॉर्मलिटी पे 150 140 इस पे आ गए थे। अब इस साल 100 120 का प्लान है उनका। सो इज देयर एनी कोटा फॉर एनी रीजन? देयर इज नो कोटा। अगर उसके ब्रोशर के ऊपर इंफॉर्मेशन पोस्टर के ऊपर कुछ लिखा भी है कि वुमेन एंड दीज रीजन आर हाईली इनकरेज टू अप्लाई, तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो बंदे वहीं से उठाएंगे, तो वो वहीं से सिलेक्ट करेंगे। ऐसा कोई क्राइट कोटा नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली ओपन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। आपका टैलेंट ही आपको यहाँ तक पहुंचा सकता है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बच्चे हैं, आपके मुकाबले में अगर कोई एक पीएन का बच्चा भी जो है वो इसके लिए क्वालिफाई करता है तो वो करेगा। यहाँ देर इज नो सिफारिश, नो एनी dominance of any region, any dominance of any community. There is only merit based scholarship. How much CGPA is required for the scholarship? The basic CGPA is required, there should be good, at least above 3। बिलो 3 आपको किसी ने नहीं रखना, बिकॉज आप वहां पे जाके फिर फेल होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, लेकिन उसको मैनेज करना आसान होता है। तो 3 से ऊपर तो एटलीस्ट होनी चाहिए। बाकी इस साल चूंकि क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया है उन्होंने, बच्चे जो है ना सेमेस्टर्स को महदूद किया है, सीटें कम की हैं, तो माइट बी 3.5, अबव 3.5 इज गुड, बट एटलीस्ट 3 से ऊपर होना चाहिए। बाकी चीजें फिर मैटर करती हैं आपकी, या तो आपको एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करें कोई चीज ऐसी, या अपने आप को आप सोशली स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन उनका बैलेंस भी बरकरार रहे, तो ऐसे ही एप्लीकेंट्स को वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So there is my email. I'm sorry that I would share my email address with the your YPDC community for the SOP review. If anyone willing to want to review his or her SOP from my side, so I would share my official email address. This email address is not working right now, so I would share the uh, my correct email address or my currently working email address for the SOP review। ओके, सो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के लिहाज से, जो इस चीज का आखिरी कंपोनेंट रह गया है। देखिए, यूग्रैड एक ऐसी जर्नी है जो आपको एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग करती है और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करती है। सही है। इसमें आप लोगों ने जो सबसे ज्यादा फायदा होता है कि आप एक आपका एक बेस्ट वर्जन आप ऊपर के सामने आता है। यू आर अ लीडर, ये उनको भी पता है जो आपको सिलेक्ट करते हैं। यू आर अ गुड इन एकेडमिक्स, सारी बात उन्होंने आपको सिलेक्ट करना है, उन्होंने किसको देख के सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर गोरों ने आप पे 36,000 या 37,000 या $40,000 लगाना है तो उन्होंने कुछ देख के लगाना है। लेकिन आपके अंदर जो इनकॉग्निटिव एबिलिटीज है, इंस्टिंक्ट एबिलिटीज है, उसको पॉलिश करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके बाद आप मेरे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यूग्रैड के अंदर बैच में पढ़ के आए थे, वहां से उनमें से काफी सारे बाहर वापस जा चुके हैं पढ़ने के लिए। वी आर स्टिल इन द लाइन, हम भी उसी प्रोसेस में है कि किसी न किसी टाइम पे हमारा भी स्कॉलरशिप हो जाए तो हम वापस बाहर चले जाएं, और पाकिस्तान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह में सर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो है ना बेसिकली आप कोई एक लीडर बना के रखता है। उसके बाद जब आप उनके अलमनाई होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, देयर ग्रांट्स होती हैं जिससे आप अपनी कम्युनिटी को पे बैक भी करते हैं। लाइक अगर आप मेरी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अब तक मैंने 3 से 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम्स किए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर ही किए हैं, अपनी फैकल्टी के अंदर ही किए हैं, और एक एग्जाम्पल सेट ये की है कि अगर यहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी में बाहर जाने का मौका मिला है तो मैंने अपनी कम्युनिटी को पे बैक किया। सही है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से यही है कि आपके सबसे बड़ी बात है, आपका यूएसए का एक वीजा लग जाता है आपके नाम के साथ, तो आपको फर्दर वीजा प्रोसेसिंग में मुश्किल नहीं आएगी। जब आप दोबारा जाना चाहें या फुल ब्राइट पे जाना चाहें या किसी और कंट्री की स्कॉलरशिप पे जाना चाहें, तो वीजा का हिंड्रेंस जो है ना वो काफी हद तक एक फैक्टर कम हो जाता है। सही है। और बाकी आप अगर जब वहां पे जाते हैं तो आपके लिंक्स बनते हैं आपके एकेडमिक एडवाइजर के साथ, आपके प्रोफेसर के साथ, तो आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं किसी भी वक्त फ्यूचर के अंदर किसी भी अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए, जो कि आपको जाहिर बात है फायदा देता है। कि एक पाकिस्तान से बैठे प्रोफेसर की रिकमेंडेशन और एक यूएसए में बैठे प्रोफेसर की रिकमेंडेशन में बड़ा फर्क होता है, और इंटरनेशनली इस चीज को माना भी जाता है। ठीक है, चाहे हम जितना मर्जी कहते रहे कि हम ज्यादा काबिल हैं, हमारे प्रोफेसर ज्यादा काबिल हैं, इस तरह है, इस तरह है, लेकिन जो एक बिटर ट्रूथ है, जो एक रियलिटी है अभी, वो यही है कि यूएस के प्रोफेसर इस वक्त सबसे ज्यादा माने जाते हैं फील्ड के। सही।
सो यही इंटरनेशनल और फ्यूचर पर्सपेक्टिव है इस प्रोग्राम के। बाकी मेरा आपको मशवरा है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो अपना यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आई डोंट नो व्हाट इज द करंट पॉलिसी क्या चल रही है बाहर भेजने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम पे। आपके सेमेस्टर को फ्रीज करवाने का कह रहे हैं या कुछ इस तरह कह रहे हैं, लेकिन जो भी आपकी पॉलिसी हो, आपने उसको अपनी फेवर में इस्तेमाल जरूर करना है। आपने जल्दबाजी में अपना एकेडमिक रिकॉर्ड खराब नहीं करना, ठीक है। लाइक अभी एक बच्ची हो के आई है हमारी फैकल्टी की, उसने जो है ना उसके 6 ग्रेड F ग्रेड है, उनको समर में रो इनरोल भी कर लेगी वो। लेकिन अगर किसी जगह पे वो स्कॉलरशिप के लिए जाती है तो ये एक इशू हर यूनिवर्सिटी में नहीं बनता, लेकिन किसी एक में बन सकता है। और ये फैकल्टी टू फैकल्टी वेरी भी करता है, कुछ फैकल्टीज कोऑपरेटिव होती हैं, कुछ नहीं होती, ठीक है, कोई कोऑपरेट कर देती हैं। तो सिलेक्शन के बाद आप लोगों ने इस सीरीज को मद्देनजर जरूर रखना है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट पे आपका कोई सब्जेक्ट वगैरह तो फेल नहीं हो रहा है, कोई फैकल्टी कोई एकेडमिक रिकॉर्ड खराब तो नहीं हो रहा। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो मेरी मशवरा यही है कि आप सेमेस्टर फ्रीज करवा के चले जाएं, हर चीज से फ्री होके स्कूल से एंजॉय करके आए और फिर दोबारा आके अपना जो है ना स्टडीज को परस्यू कर, ठीक है। बिकॉज अगर आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उसकी कीमत में 1 साल अगर आप अपना दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। आप अच्छी जगह पे अपना टाइम स्पेंड करके आ रहे हैं। So that was all from my end. If you guys have any questions, so I am available for the questions or according to the what the plans at the YPDC end. I think so my session has just less than 1 minute, and I have done with my presentation, and I have tried my best to give you the overview of the UGRAD, what are the future perspectives, and what are the application technicalities. Thank you very much, guys. Thank you so much, Sir Hasnan. If anybody has any question for Sir Hasnan, you can unmute yourself and ask. Thank you, sir, for your insightful presentation. Let's move forward towards our next agenda. I would like to invite Ms. Hijab for navigating the application process of this exchange program. Thank you, Mahin. Kindly मुझे confirm कर दें कि am I fully audible? Yes, you are completely audible. All right. So let me share my screen. Yes. So I'll be guiding you about the application process. आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप का इंट्रोडक्शन और हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इस एक्सचेंज प्रोग्राम से। सर हसनैन ने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कि हमने एप्लीकेशन फिल आउट कैसे करनी है। उसके लिए आपको USAFP की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे आपने ग्लोबल यूग्रेड का प्रोग्राम सेलेक्ट कर देना है। जब आप ग्लोबल यूग्रेड का प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका स्टेटस ओपन नजर आ रहा है, यानी अभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा रही हैं, लेकिन डेडलाइन है सितंबर 25। और आप फ्लायर चेक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट FAQ पे जा सकते हैं, एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका फ्लायर चेक करें तो ये हमारे पास इस साल का फ्लायर है 2025 के कैंडिडेट्स के लिए। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या होंगे, इन एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ये आप लोग इसको डिटेल से एक दफा देख लीजिएगा। हम लोग FAQs पे जा सकते हैं, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जब हमने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, ओके वी हैव टू कंटिन्यू हियर। तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, हमें वो एक लॉगिन ईमेल देंगे जो इससे हमने लॉगिन करना है अपनी ईमेल से। और उस ईमेल से लॉगिन करने के बाद बिकॉज इंटरनेट मेरे पास थोड़ा तो है, इसलिए आई एम नॉट डूइंग एवरी सिंगल स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू। तो होना यह है कि जब आप अपनी ईमेल इनपुट करेंगे तो आपको USAFP की एक ईमेल आएगी
जिसमें वो आपको डिटेल दे रहे हैं कि ठीक है आप लॉग इन हो चुके हैं एंड हियर इज योर पासवर्ड। आपने वो पासवर्ड कॉपी करना है, कॉपी करके आपने पेस्ट करना है यहाँ पे और आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन इंस्पेक्टर नजर आएगा। ये इंस्पेक्टर बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन कितने % कंप्लीट हो चुकी है, क्या आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, और अगर इनकम्प्लीट है तो इसमें कौन से पॉइंट्स इनकम्प्लीट हैं। तो हमारे पास कुछ सेक्शन है, जैसे सर हसनैन ने भी इसके बारे में बताया। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी गेट स्टार्टेड में। हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, कुछ मजीद इंफॉर्मेशन है। हम इन सब सेक्शन को वन बाय वन कवर करेंगे। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा नाम, योर फर्स्ट नेम, योर मिडिल नेम, योर लास्ट नेम। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने वो नाम अपना लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है। फॉर एग्जाम्पल मेरे आईडी कार्ड पे जैसे हिजाब जारा है तो मेरा फर्स्ट नेम आएगा हिजाब और मेरा लास्ट नेम जारा आएगा और मेरा कोई मिडिल नेम नहीं होगा। और फिर आपने अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास मल्टीपल सिटीजनशिप्स हैं या नहीं है, आपके पाकिस्तानी नेशनल हैं। अगर आपकी जो प्रेजेंट सिटीजनशिप है वो कौन सी है, फॉर एग्जांपल हम लोग, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मोस्टली हम में से पाकिस्तानी ही हैं, तो हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। लीगल रेजिडेंस भी हम लोगों की पाकिस्तान में है। अगर आप लोगों की कोई और लीगल रेजिडेंस है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप सब स्टूडेंट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। फिर आपने अपनी बर्थ डिटेल्स देनी है, सिटी, कंट्री, और अगर सिटी कुछ और आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं सिटी के अलावा तो वो आप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अगेन वो जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। जेंडर सेलेक्ट करना है आपने, अपना मैरिजल स्टेटस बताना है। और उसके बाद ये कि अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेट करेंगे। फिर आपकी कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन आपने देनी है, अपना मुकम्मल कांटेक्ट आपने देना है, एड्रेस देना है, सिटी, पोस्टल कोड, अपनी सिटी का आपने पोस्टल कोड देना है, अपने प्रोविंस, कंट्री, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। और अगर आपके पास फोन नंबर नहीं है तो आपने इसको एम्प्टी नहीं छोड़ना, वरना ये, क्योंकि ये एक नेसेसरी सेक्शन है, इसको हमने एम्प्टी नहीं छोड़ना। तो आपने इस फॉर्मेट पे, जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है, हमें सिर्फ 00 डायल कर देना है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मोस्टली हमारे पास मोबाइल नंबर हैं जिनसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, फोन नंबर यानी PTCL नंबर हम लोग यूज नहीं करते, तो इसलिए हम हिस्सा छोड़ेंगे। परमानेंट होम एड्रेस, अगेन आपने अपना एड्रेस देना है। इमरजेंसी कांटेक्ट में आपने वो कांटेक्ट प्रोवाइड करने हैं कि इन केस आपका जो कांटेक्ट है उस पे कांटेक्ट ना हो पाए, यानी कि आपकी जो कांटेक्ट डिटेल्स में आपके ईमेल, आपका फोन नंबर, उस पर कांटेक्ट ना हो पा रहा हो, या आपके हवाले से कोई इमरजेंसी हो, तो फर्स्ट कांटेक्ट जिसको उन्होंने रीच आउट करना है वो आपने अपना यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अपनी पेरेंट्स का कांटेक्ट दे सकते हैं, अपनी सिबलिंग्स को कांटेक्ट दे सकते हैं, या आपको जो लगता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में किसको रीच आउट करना चाहिए उसको आप वहाँ पे कांटेक्ट दे सकते हैं। आपने बताना है कि हमारा उससे रिलेशनशिप क्या है, उनका एड्रेस, सारा सारी डिटेल्स। ये करने के बाद एक पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप एक सेक्शन फिल आउट करेंगे आपने एप्लीकेशन को सेव लाजमी करना है। अगर आप सेव किए बगैर नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे तो पॉसिबल है आपको ये सेक्शन सेव ना हुआ हो और ये दोबारा से आपको फिल आउट करना पड़े। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एकेडमिक इंफॉर्मेशन का। एकेडमिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपनी डिग्री बतानी है, करंट डिग्री। अब इसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके जाना है। सबसे पहले आपने सबसे रीसेंट डिग्री का नाम, उसका स्टार्टिंग मंथ, स्टार्टिंग ईयर, फील्ड आपकी क्या है, आप करंटली इनरोल हो रहे हैं या नहीं इनरोल्ड, आप ग्रेजुएटेड हैं, ये आपने बताना है। फॉर एग्जांपल इधर हम बताएंगे सबसे पहले कि हम हमारी जो डिग्री है BS कर रहे हैं, हम लोग बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर 2 ईयर या 4 ईयर्स। और इधर से आपने जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर देना, उसकी सारी आपने डिटेल देनी है इंस्टीट्यूशन की,
सब कुछ, और फिर CGPA आउट ऑफ टोटल CGPA हमने देना है टोटल, और हमारी जो अपनी CGPA है या परसेंटेज है वो हमने इसमें देनी है, और फिर हमने सेव कर देना है। डिग्री हमारी BS की डिटेल के बाद फिर नेक्स्ट हमने डिटेल देनी है अपनी इंटर की, और अगर आप मेट्रो की देना चाहें तो थर्ड नंबर पे हमारी मेट्रो की आती है, यानी कि मोस्ट रिसेंट डिग्री आपकी सबसे पहले आएगी, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उससे पहले वाली आपकी डिग्री, फिर उससे पहले वाली आपकी डिग्री, इस तरह से आपने अपनी डिग्री यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आपने टोफल टेस्ट दिया है तो उसका आपने स्कोर ऐड करना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, तो अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो इसका आपकी एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं होगा, बिकॉज आपकी सिलेक्शन के बाद वो खुद आपका टोफल टेस्ट ले लेते हैं। तो अगर लेकिन आपने पहले दिया हुआ है तो आपने बताना है कि किस टाइप का टोफल टेस्ट दिया। डिफरेंट टाइप के होते हैं टोफल टेस्ट, IDP होता है, CBT है, IBT है, तो आपने कौन सा दिया है, उसमें आपका स्कोर क्या है, किस डेट को दिया है, कहाँ पे दिया है। और अगर टोफल के अलावा कोई टेस्ट दिया है, लाइक आइल्स आपने दिया है, सेट का टेस्ट दिया है, या DET आजकल USA में बहुत चल रहा है जो लिंगो टेस्ट, वो आपने दिया तो आपने उसकी भी डिटेल मेंशन कर दें। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो आपकी एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस पे कोई इसका असर नहीं होगा, बिकॉज अगेन उन्होंने सिलेक्शन के बाद ही आपका टेस्ट लाजमी लेना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने बताना है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, कितने अरसे से आपको आती हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, या जो भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं, उसमें हमारी रीडिंग एबिलिटी कितनी है, राइटिंग एबिलिटी कितनी है, स्पीकिंग एबिलिटी कितनी है, हमने खुद से ग्रेड करना है इसमें, ये करना है। फिर अगेन यूनिवर्सिटी कोर्सेज, अब यूनिवर्सिटी कोर्सेज में आपके वो कोर्सेज हैं जो आप अपनी इस डिग्री में पढ़ रहे हैं, यानी BS की डिग्री में आपने पढ़ चुके हैं, आपने उन कोर्सेज का नाम लिखना है, कोर्स टाइटल, और किस साल में आपने पढ़ा, और आपका ग्रेड क्या आया था वो आपने लिखना है। मैं इसमें पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि आप लोग वो कोर्सेज लिखें कि जिसमें आपके अच्छे ग्रेड आए हैं, लाइक A ग्रेड आया है, B हायर B आया है, तो वो आप लिखें, और मेरे ख्याल से आप लोग मैक्सिमम 5 इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट 50 है, तो आप अपने अच्छे ग्रेड्स वाले कोर्सेज को इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा सेक्शन है कि हम लोग US में कौन सी फील्ड पढ़ना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट कर देनी कि हम US में किस फील्ड पे, क्योंकि ये एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये एकेडमिक प्रोग्राम नहीं है कि आपकी जो डिग्री है आपने वही जाके वहाँ पे पढ़ना है। इसीलिए हमें हमारी यूनिवर्सिटी में कभी कभार सेमेस्टर फ्रीज करवाना पड़ता है, बिकॉज हम एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पे हैं, ना कि एकेडमिक प्रोग्राम पे हैं। तो आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी जो डिग्री है आपने वहां जाके भी उसी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कि आप एक सेमेस्टर के अंदर वहां पे क्या पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी डिग्री से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कुछ भी जो भी पढ़ना चाह रहे हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स देनी है, आपकी डिग्री क्या है, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, फैकल्टी या डिपार्टमेंट क्या है। अगेन ये सारी जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, फैक्ट्स हम लोगों का अक्सर हमें नहीं पता होता, इस पे आपने अगेन एम्प्टी नहीं छोड़ना, आपने नॉट अटेम्प्टेड NA लिख देना है। इसके बाद करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की डिटेल के बाद लास्ट अटेंडेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इसकी डिटेल्स देनी है। फॉर एग्जांपल आपने जो इंटरमीडिएट जिस इंस्टीट्यूट से किया है आप उस इंस्टीट्यूट की डिटेल्स इसमें देंगे। अभी आपका कोर्स ईयर कौन सा है, मेरे ख्याल से सिर्फ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इस बार अप्लाई कर सकते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में ये थर्ड सेमेस्टर होगा उनका, तो आपने बताना है कि ये हमारा थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और ये सेकेंड ईयर है हमारे 4 ईयर या 5 ईयर डिग्री का। आपकी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन की डेट क्या है, और आपका होम कंट्री में यानी अभी जो आप कर रहे हैं वहाँ पे आपका मेजर या आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। ताकि एकेडमिक इंफॉर्मेशन करने के बाद अगेन आपने सेव करना है, सेव करके आपने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करना है। अब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन है। अब इस सेक्शन में हमने अपनी वॉलंटियर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इनपुट करनी है।
क्या पहले हमारा कोई वीजा रहा है? अगर आपका कोई वीजा ऑलरेडी रहा है तो आपने वो ऐड कर देना है, अदरवाइज आपने इसको छोड़ देना है। आप बताएं कि मैंने पहले कोई वीजा नहीं लिया, आप नो कर देंगे और आपको कोई एडिशनल चीज नहीं देनी पड़ेगी। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में आपने अपनी वॉलंटियर पोजीशंस बतानी है, वर्क एक्सपीरियंस आपका कोई है तो वो बताना है, आपको कुछ अवार्ड मिले हैं तो वो बताना है, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, ऐसे प्रोजेक्ट में जो सोसाइटी के लिए वॉलंटियर का प्रोजेक्ट था या वैसे इंफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट था सोसाइटी के लिए, ये सारी एक्टिविटीज आपने बतानी है। उसका टाइम पीरियड कितना रहा है वो आपने बताना है। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जैसे वो पूछने के क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं या नहीं, अगर आप अरेस्ट हुए हैं तो उसकी आपने डिटेल बतानी है। तो इसमें हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या आपको कभी किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से एक्सपेल किया गया है, निकाला गया है? अगर हाँ तो फिर वो भी आपने सारी डिटेल बतानी है और आपकी एक्सपेल्शन की रीजन भी बतानी है। अदरवाइज यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट नो हियर। यहाँ पे मैं आपको ओके नेक्स्ट अगेन सेव करना है और हमने नेक्स्ट मूव ऑन कर जाना है। सो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जो फेमस सेक्शन है पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का सेक्शन। अब हमने इसमें एक ऐसे लिखना है 200 to 250 वर्ड्स का, मिनिमम 200 वर्ड्स हो लेकिन 250 वर्ड से ज्यादा बिल्कुल भी ना हो। हमने ऐसे लिखना है और उस ऐसे में हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है कि हमारी इंटरेस्ट क्या है, अपनी पर्सनालिटी के बारे में लिखना है, अपने एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है, आपकी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में या पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में जो आपके गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स, उनके बारे में लिखना है। और आप अपने गोल्स को परसू करने के लिए यूएस से क्यों जाना चाहते हैं और यूएस से पर्टिकुलर इस प्रोग्राम यूग्रेड के प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपके गोल्स में आपकी हेल्प कैसे करेगा, ये आपने 4 पॉइंट्स हैं जो आपने अपनी एसओपी में लिखने हैं। और वो एसओपी आपने लिख के रिव्यू करवा के आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो हमारा डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। डॉक्यूमेंट्स में हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। ट्रांसक्रिप्ट हमारी जो जितने भी प्रीवियस सेमेस्टर गुजर चुके हैं उन सब उनकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। अगर आप सब यूएफ के स्टूडेंट्स हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आपको जल्द से जल्द ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको ट्रांसक्रिप्ट तो मिलने में भी कुछ टाइम लग जाता है। तो एप्लीकेशन की डेडलाइन भी सितंबर में ही है, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप मंडे से ही या कल फ्राइडे कल से ही अप्लाई कर दें अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो। और ऑप्शनल एक डॉक्यूमेंट है डिग्री का। अगर आपकी कोई डिग्री है जो प्रीवियसली कंप्लीट हो चुकी है उसको आप अपलोड उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। टेस्ट कोर्स का भी ऑप्शन है। अगर आपने टोफल आईएलटीएस या कोई भी इस तरह का टेस्ट दिया है तो आप उसका रिजल्ट उसका स्कोर अपलोड करेंगे। एडिशनल अपलोड पेज, अब यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं। आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जो बताएं कि आपकी पर्सनैलिटी वेल ग्रूम्ड है और आप सिर्फ अपनी स्टडीज के ऊपर ही फोकस नहीं है आपका, बल्कि स्टडीज से बाहर भी आपकी एक्टिविटीज हैं। लाइक वॉलंटियर प्रोजेक्ट में कोई आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है, किसी सेमिनार को आपने अटेंड किया है वो आपको सर्टिफिकेट मिला है, इस तरह के आप या कोई आपको अवार्ड मिले हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो आपने वो सारे ऐड कर देने हैं। हम इसमें 5 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा है या आप चाह रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा चीजें मेरे पास हैं, इतनी चीजें मैं जो अपलोड करूं और मैं उनको शोकेस करना चाह रहा हूँ, तो आप हमको इस तरह से कर सकते हैं कि एक पीडीएफ में मर्ज करके 3-4 डॉक्यूमेंट्स को वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पर आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, लेकिन एक और बात जहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मेरी एप्लीकेशन वीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं और उन सब के ऊपर जज करके वो ओवरऑल रिजल्ट के मुताबिक हमारी सिलेक्शन होती है। तो सिर्फ एक सेक्शन या एक डॉक्यूमेंट की ज्यादती या कमी की वजह से आपकी सिलेक्शन अफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन अगेन अगर आपके पास ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है।
जब आप सब सेक्शन फिल कर देंगे, आपका इंस्पेक्टर साथ साथ आपको बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है। जब आपकी 100% या 90% कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगा रिव्यू करके सबमिट करवाने का। अभी मैं रिव्यू सबमिट नहीं करा सकती बिकॉज मेरी जो एप्लीकेशन है वो अभी इनकम्प्लीट है। जब मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और मैं एप्लीकेशन सबमिट करा। एंड अगेन आपके पास डेडलाइन है सितंबर 25 और 5 PM तक डेडलाइन है। 5 बजे के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा सकेंगे। So, any question regarding application process? Okay, if there is not any questions, so I'm done here. That was all from my side. Up to you, Mahi. Yes, Mahin, I'm done here. You can call next speaker. Ma'am Hijab, there's one question in chat section, so will you please answer that question first? Okay, there is a question कि is it mandatory कि आपकी डिग्री HEC verify हो? So I would say कि ये बैचलर्स के लिए अंडर ग्रेजुएट का एक्सचेंज प्रोग्राम है। I don't think so आपके पास कोई डिग्री होगी। इन केस आपके पास कोई डिग्री है तो मेरे ख्याल से वो HEC जब तक HEC वेरीफाइड नहीं होगी तो वो आपकी डिग्री कहीं पे भी यूज नहीं हो पाएगी। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हो सकता है मैं इस पे गलत हूँ। हम अपने नेक्स्ट स्पीकर से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। Thank you so much, Hijab. I would like to give answer to that question. Well, as far as recognition from HEC is concerned, right now while applying, you don't need any verification from HEC or IBCC abroad. But once you get selected, then you will need all of that stuff for visa processing and all of these stuff. I hope I have answered your question. Okay. So moving on towards our next agenda, I would like to thank you so much, Hizab. I would like to invite Sir Ali Hamza for giving us insights on his experience on his journey of UGRAD. So thank you so much, sir. Over to you. Thank you so much. Are you guys like able to hear me? Yes, sir. Okay. So Assalamu alaikum and good afternoon. As it says, like it's 2 a.m. in Pakistan. So first of all, I would say that I'm very, very happy and honored to be as a guest or through the as like the UGRAD program in the YPDC because I remember the time when there are two class fellows of me in this meeting. It's Aisha and Isa, and I used to call one of them that I want to join the YPDC as a general member, and today here I am as a guest. So I would say it's kind of overwhelming for me and exciting for me that I am have joined as a guest. So it's kind of achievement. I'm feeling honored. So this section is about the UGRAD journey. So you have heard about the UGRAD journey of the past participants. So now I'm going to share the UGRAD journey of me. So my name is Ali Hamza Ibrahim, and I am the current UGRAD principal candidate for the fall 2024. So I applied in 2023 and I selected as a principal candidate for the fall 2024. And right now I have been placed in the Southern Illinois University, Illinois. You might it is very near to Chicago. So you can say I have been placed at Chicago, and right now I'm in USA. So I would say that I am like excited to share some of my personal insights about this program. Uh, it would be like more of answering the questions through which I will like share my journey with you guys. So it's like when I applied for this program, my biggest concern was like, is it really the fully funded program? So everything that is mentioned on the flyer, yeah, it is fully funded program. So I would say my journey has been very, very, very good.
So you are not gonna pay a single penny from your pocket. It's like the USCFP and the IREX. USCFP is the organization that controls the UGRAD from Pakistan, and IREX is the organization that controls UGRAD from US. So they both are gonna take care of you financially and everything. Okay, so you're not gonna have to pay anything. Yeah, your airfare ticket, your accommodation, your meal plan, your tuition fee, everything is covered in this. So when you come here to USA, you don't need to worry anything about this. Okay. So I would say the second question that was in my mind when I was going to apply, that am I going to freeze my semester in the like in the university back at Pakistan? Like, am I like going to left behind from my fellows, or I'm going to like delay my degree? This was like a concerning part for my UGRAD journey. So I would say that you guys are very lucky that you are from the University of Agriculture Faisalabad. Luckily, the University of Agriculture Faisalabad, usually all of the departments accept the credit from the US universities. So I am from like the NIFSA department. I'm doing food science and technology. So my uh, credits are going to transfer, and I most probably think so that if you guys are from different departments, talk to your professors, talk to your dean, and they are like eventually going to help you, and your credits will transfer. You don't need to freeze your semester. So how is the actual experience in US? That is the most thing that I want to talk about. What is we when we talk about UGRAD, we exaggerate a lot of things. Okay. So is it like the real exaggeration? Are they like uh, truly the way they are depicted? So I would say the percentage is 90 and 10%. 90% they are identical, they are the same as they are portrayed, and 10% are not the things that you are expecting that you will be experiencing as a UGRAD in USA. And I would say that 10% uh, is heavily influenced by the state you are placed at, and in which university you go to Pakistan, in terms of the credit exchange, and the third one your personal experiences, and what kind of you can say community you belong to Pakistan. So I would say that when you come to USA from Pakistan, if you are selected as a principal candidate or an alternate candidate, if you're a principal candidate, congratulations to you. You are guaranteed you're coming to USA. I would say my recommendation is that all of you guys please come to USA with open-mindedness. The there you're gonna experiences a lot of culture shocks. The society is really very different. You are not living in a typical Pakistani religious society or community. People are here are very advanced, but their living is very different. Their social patterns and behaviors are very different from like we have been living in Pakistan. So I would say if you're coming to Pakistan, and I would say get please like place your rights and your wrongs aside and experience these 4 months or 5 months of a semester for where you are in USA to the fullest. Okay, don't be judgmental. Be open to the new experiences. Okay, you're gonna have a lot of experiences. Be open as an initiator, be a conversationist. Even if you are like introvert person, you like to be in your like comfort zone. You don't want to break your social bubble, but I would say you have to be more extrovert or like initiator, starter in here, so that you can like truly benefit from this program. And I would say that this is the main essence of this program, that it is a non degree academic. Obviously, you're going to come here and study, but it's a non degree. And the word that they mostly focus on is the culture exchange program. So when you come here, you are going to like spread your culture, make people aware about the culture of Pakistan, and learn about their culture. I would say till now my yoga journey has been very good. So I'm as an open-minded student from Pakistan. It also depends like what kind of bringing, how much you are taught to the religion. This is the place where your real connection to the religion and your Allah Almighty is going to test. I would say.
some of the culture shocks that you can experience is the I would love to talk about culture shocks. Is that you are not going to have the Muslim showers here. This is the first culture shock. The second culture shock is the food. Every Ukrainian that comes to like USA, they are gonna suffer from the food because when we come to USA, we like look for the Pakistani food, we look for the spices. The eating pattern and consumption is very different from what we eat in Pakistan. So I would say don't compare, okay? Don't compare Pakistani society with the US society. Don't compare their food with our food because you are in a different regions of the world. So the people are different, the cultures are different, the languages and the histories are different. So there's no need to compare and then decide this is good or this is bad. This is not according to my terms, this is according to my terms, or like this fits or this doesn't fit in my society because they are different societies. The mindset is different, the bringing is habits different. So I would say don't compare at all. Wherever you are, try to be like fit in that environment. And one question is about the SOP. Like I have been reviewing the SOP of a lot of like new graduates that are applying for this program. So I want to say that they have like revised eligibility criteria that only the third and fourth students are going to apply. So I would say when you're writing your SOP, yeah, you have mentioned all of your academics and like in the application. When you are writing your SOP, do focus on your volunteer work, do focus on your social services or any community services that you have, and try to put these words, these words like communication or cross culture, intraversity, inclusivity, and philanthropic in your SOP. Because when I applied, there were 36,000 applicants, and out of which, for this batch, only 200 were got like shortlisted. And after like the interview, only 100 students are the principal candidates, out of which 50 are here for fall semester and 50 will come for spring semester when we will be back in Pakistan. So they are not gonna read the 36,000 statement of purposes. So there's an algorithm they make the SOPs to run through. So they have some like keywords. I would say that put some words in your like I have this volunteer thing, I have this uh, cross-cultural communication thing, I have this fundraising thing, I have this community service, I attended this program, this seminar. Uh, Focus on your extracurricular things, what you have done for the society, because you have already mentioned a lot about your academics. Even you have mentioned your like courses you are studying in your first and second semester. There's another advice that when you're mentioning, don't mention and that the subjects in which you have got A grades. Like if you're mentioning 15 students, 15 subjects, and there is A, they are not like and gonna impress by this. So when I applied for this, I put some A and intentionally I put some subjects in which I got B. And I remember I put only three subjects, about three or four subjects related to my field, and all of the other were my minors. That we studied the composition, English composition course, we studied the mathematics course, we studied the biochemistry course, we studied Pakistan studies course. Okay, so try to put these courses in your study course list. This is my I would say advice. And the second thing is that there's another question I want to ask that the visa, a lot of you guys are very worried about the visa. So my genuine advice is that you guys don't need to worry about visa right now. Okay, just focus on your SOP, focus on your statement of purpose. This is going to decide whether you are going to be here or not. Everything else can wait. Okay, so right now focus on your SOP. There's another thing for the UAF students that if you don't have transcript and you apply for the transcript on Friday, Thursday, or Monday, and you are afraid that you are not gonna get it by the deadline, so I would say make your own transcript, like I made when I applied. I didn't have the transcript at that time, so I made my own transcript. I put like I you view the template from the Google, and I made my own transcript that was basically the unofficial transcript on the Word document, and I uploaded that. And when I got selected, then I applied for the official transcript with the all of the signs and signatures.
there. So I would say that yeah, it's true that UGRAD is a lifelong experience. It's once in a lifetime opportunity. So yeah, even if you have to freeze or like your semester in back in Pakistan, I would say that don't like even think about for a second time. Just apply for this program, and this is really like super experience in your life. This is gonna be a super thing in your resume, and you will learn a lot about different cultures because I have made a lot of Nepali friends, American friends, France friends, and some other Spain, and they're all Indians and Pakistanis here. So you're gonna really be in those people actually and learn about their culture. You learn about leadership, and the one thing that you're gonna learn about is what is this called? Leaderships and time management. So I would say that do apply these programs, and I wish you congratulations. I think I have taken more time than I was even allowed to. I would love to talk about this great program with my Pakistani friends. So if you have any questions, because right now I'm in USA, I can answer more. I think more good if you have any concerns about USA culture or the application process or anything. If you have, do like write your in this. What about BS honors students? We have not selected our major yet. We have to select it after fourth semester, which major to. I think you guys are talking about the agriculture thing, in which you study fourth semester and after that you like because bro or whatever you are applying in third semester. So just put the name of the degree in which you got your BS uh, honors. Like if you're doing BS agriculture, just put BS agriculture. You don't need to put your major. Okay, they are not gonna ask you about your major. So when you're gonna select the subject you intend to study in USA, when you come to USA, put agriculture there. Or if you want to study any other thing, you can. Like some of my UGRAD fellows have selected the dance and music as their majors in USA. Okay, so you can do this, but then I would recommend that don't do this. Study whatever you study in Pakistan, so that you can get a chance to transfer your credits. Okay. Is there any question that I can answer? Transcript की जगह GPA list नहीं लगा सकते. I would recommend please don't do this. Okay. I would say because you are a UFC student, so our results get uploaded on the LMS. So now, don't do this. Make your own transcript if you can. Okay. Or I would say officially apply for the transcript. Okay. Is there any other So, question? thank you, Ali Hamza. Uh, Here's a question from our students' behalf, because students come to us and ask के जो हमारा SOP है उसको कैसे strong बनाया जाता है, and specifically other than the word limitations, what makes you stand out above among all? So okay. what did So you write? Yes. I would like to say there's my Instagram page. It's called Brown Light Hamza. I'm gonna leave the comment in my username. So I have made a video, okay, about how to stand your applications and a lot of these applicants. I just answered these questions that they are not going to read the thousands of SOPs. Okay, so there's an algorithm or there's a criterion through which your like SOP is going to run through. So to stand out your application, your academics have already been mentioned in your application. So when you're writing your SOP, try to like deconstruct it into four paragraphs. In the first paragraph, just talk about what are you, what is your history, okay. In the second paragraph, tell about your academics a little. I think one line is enough for your academics. Then rest of the paragraph should focus on your volunteer thing, your community service. What are your plans about UGRAD? What are your plans about your degree? So when you are writing your SOP, you have to write about your major. So my major is food science, and I put some word about food science that I wanna do food project management or food development, anything.
and they do ask me questions from my SOP when I was interviewed. Okay, so tell them that you are serious about your major, because I think so in instructions they have asked why you choose this major. So you have to like really defend this question that why you choose this. Uh, have a good knowledge about your major and try to answer this question as honestly as possible. There's no need to brag things, okay? Try to be humble and honest. And then the third paragraph. You should focus is again on what will you gain when you will in USA. Okay, this is very important. So in this paragraph, tell them that you expect this from the UGRAD, from the academic point of view, and as well as from the non-academic point of view, as a cultural, societal, communal point of view. Okay, and I would say in the third paragraph, there's another thing. I mentioned that they do ask you what will you serve back when you come to Pakistan. So tell them their plan. Okay, tell them what are you gonna do when you will come back to Pakistan. So what I wrote, okay, I said that I will do workshops. I will do some I will initiate some of the programs or anything that I can in my own capacity can do. I will tell or teach my class followers and students about this program, what I have learned in the USA, and like I will let them about my insights, what I gained from them, through what was my academic exposure there, how it is different from Pakistan, how can we improve. So this is how tell them what are you going to do when you're back in Pakistan. So this all of these four paragraphs should be interconnected. It is not like one is in a different direction. The second is not related with the third, and third is like very completely different also. You are one person. Your SOP is one person. It should not look like the four other people have written those four paragraphs. So all of these paragraphs should be interconnected. They should mention how UGRAD is important for you, how it is gonna serve you, and how will benefit from UGRAD, and how will you benefit your community when you will come to Pakistan. Okay, like I'm sure that I have answered these questions. Is there any question? No, Hamza, I think students have cleared things, but when if you can share your email or things so that students can send any of the SOP or for review, we would be happy for that. But Yeah. Okay. For all of the people who want to like review their SOPs, they can send me on my Instagram. Okay. I'm so sorry that I cannot share my official email because it has been registered with a lot of things. And when I okay, start getting a lot of emails, then it's gonna mess up things. So I am okay, reviewing the recipes on my Instagram. So I have like written down my Instagram username. It's Brown Lad Hamza. You guys can go and follow me, and just give me a text that that there's an recipe and review this, and I will review it. Okay. okay. Thank you so much. So, thank you so much to all our guest speakers as well, and to our participants for keeping with us till 1 hour and 30 minutes. So I think now it's time to go and prepare for your application and register there. And we wish you best of luck for your exchange program. Thank you so much, and Allah. Thank you, and Allah Hafiz, and good night.